Good morning, my dear friends. I am Vijendra Jain with this very first video of chapter number 1 of Standard 9 Science, the fundamental unit of life. Again, I repeat the name of lesson, the fundamental unit of life. Life means I am talking about life and the fundamental unit of life. So, the chapter basically related, the chapter is from biology and the chapter is related with this cell that I have already written over here. So the fundamental unit of life cell. तो why it is called the fundamental unit of life? तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, राइट? You have seen some construction sites where the buildings are built up, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, या फिर you have seen some bungalows, you have seen some houses. जब वो बन रहे होते हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे अरेंज द ब्रिक्स and they make a boundaries and then they make a roof. So what about this example कि that bricks कि जिससे ये पूरी buildings, ये houses, ये bungalows बनते हैं, तो that brick is a basic unit of that building, that house, that bungalow, etc. उसी तरह से ये जो हमारी बॉडी है, our body is made up of cell. हमारी जो बॉडी है वो भी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. एंड ऑलरेडी यू हैव सीन इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स इन 7th 8th यू आर फैमिलियर विद सेल. सेल इज अ बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट. बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल. स्ट्रक्चरल क्यों? बिकॉज आवर बॉडी, होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स की अगर मैं बात करूं तो आवर बॉडी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो सेल्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. हमारी बॉडी के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो द सेल कन्वर्ट इनटू टिश्यू, टिश्यू कन्वर्ट इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स जो मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि सेल दैट इज द स्ट्रक्चरल. नाउ फंक्शनल, फंक्शंस की बात बताऊं तो इन द प्रीवियस लेसन्स in standard 8th or 7th we have seen we are taking respiration. हम respiration करते हैं, हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो that oxygen which we use for respiration break downs our food particles और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, राइट? सो that food particles, वो जो food particles का प्रोसेस है वो भी सेल में होता है. It means all the process in our entire body is done in the cell. So therefore it is the functional unit also. So here it is clear that cell is basic structural or functional unit of life. Now see, human body, it is the fundamental organizational unit of life. ये भी मैंने आपको explain कर दिया. Now the next, what is about the discovery? What is about the discovery? कि सेल की exactly discovery है क्या? ये सेल किसने सबसे पहले डिस्कवर किए, इसको किस तरह से इसका जो वजूद है वो यहां पर आया. सो सी, फर्स्ट इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इन 1665 वर फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, अब उसने ये डिस्कवरी कैसे की तो लेट्स सी. अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, thin slice of a cork. Again I cleared it that the cork is a substance which comes from a bark of tree. Bark of tree means जो tree होता है उसके ऊपर की जो परत होती है, that is cork is a substance which comes from a bark of tree. So it is clear कि first of all in 1665 Robert Hooke were first discovered cell. Then a thin slice of a cork, थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, यानी उसने एक ट्री की जो लेयर है उसको उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा तो इट रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब मींस दैट बीज जो वो बनाती हैं, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता हम जिसको बोलते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ये दोनों चीजें उसको सेम लगी. क्या? अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क. ही सॉ द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब. यू सी the structure of honeycomb like this way. The structure of honeycomb is made up of,
तो इस तरह के उसको बॉक्सेस उसमें दिखाई दिए, राइट. सो फ्रॉम दैट ही डिस्कवर्ड first the cells and he also named it cell. So the discovery of cell firstly by Robert Hooke in 1665. So Robert Hooke, cells were first discovered by him. Now the next in 1674, अब जैसे कि सेल की डिस्कवरी, कोई भी डिस्कवरी होती जाती है उसके बाद उसमें इंक्रीज वो डिस्कवरी और आगे बढ़ती जाती है, तो यहां पर भी वही है. In 1674 Lewin Hooke with the improved microscope discovered the free living cells in water, pond water for the first time. सबसे पहले किसने पॉन्ड वाटर में 1674 में ल्यूइन हॉक with the improved microscope discovered the free living cells in the pond water for the first time. तो the question arise कि सबसे पहले पॉन्ड वाटर में जो फर्स्ट टाइम सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स किसने देखे, तो द आंसर इज इन 1674 ल्यूइन हुक. नाउ द नेक्स्ट 1831 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. अब जैसे जैसे सेल की डिस्कवरी होती गई तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और भी काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल्स के अंदर भी, उनका भी डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गया. तो इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. नाउ इन 1839 परिकिंजे हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड इन द सेल. फ्लूइड इन द सेल मींस लिक्विड. सेल के अंदर कुछ लिक्विड होता है जिसको उसने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया. तो हु गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म. तो इन 1839 परिकिंजे हु कॉइन्ड द टर्म protoplasm for the fluid in the cell. Again I clear that fluid means the liquid form in the cell, named by Perkin J protoplasm in 1839. Next, now two more scientists in 1838 Sladen and in 1839 Swan. इन दोनों ने मिलकर एक थियरी बनाई कि द सेल थियरी इन्होंने एक ऐसी रेडी की कि all the plants and all the animals are made up of cell, and cell is the basic unit of life. Of what? Of whom? The plants and animals. Both the scientists Sladen and Swan in 1838-1839 made the cell theory that all the plants and animals are composed of the cell, and the cell is the basic unit of life. So now the next in 1855 Virchow, the cell arise from pre-existing cell. इसका क्या मतलब होगा कि pre-existing cells means generally we have knew के पुराने सेल्स में से नए सेल्स बनते हैं. तो यहाँ पर ये किसने डिस्कवर किया, तो in 1855 Virchow, the cell arise from pre-existing cells. It means if I am talking about humans, तो जो newly humans are born with the old existing, जो pre-existing parents, the parents also from the pre-existing grandparents. उसके बाद it means cells जो हैं वो the cells arise from pre-existing cells. So this is the cell theory, the discovery of cell. So again I am repeating, cell is a structural and functional unit of the human body, and also it is a fundamental organizational unit of life. The discovery in 1665, first Robert Hooke discovered the cell. Afterwards 1674 Lewin Hawke pond water में free living cells को discover किया, and then 1831 Robert Brown first discovered nucleus in the cell. In 1839 Purkinje who coined the term protoplasm, the fluid in the cell. 1838 Sladen and 1839 Swan made a theory regarding what the body of plants and animals made up of cells, and that is the basic unit of life. And the last 1855 Virchow, the cell arise from pre-existing cell, ये उसने डिस्कवर किया. So basically इन सारी बातों से क्या पता चला कि ये सेल की डिस्कवरी है. लेकिन I just tell you कि cell is a very minute particles, जिसको हम बोले तो भी चलेगा. तो we can't see the cell with our naked eye. So how it is possible? तो in early time in 1560
one scientist was there. I don't know the name, but he firstly discovered the microscope with the magnifying glass. And after all this discovery in 1940, the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंटेड हुआ, उसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940. आफ्टर दैट डिस्कवरी द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज led to the discovery of the microscopic world. Means microscopic, the world that we can't see with our naked eye. तो after the discovery of electron microscope, ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसका डिस्कवरी स्टार्ट हुआ. साइंटिस्ट ने अब उसको ब्रीफली डिस्कवर करना स्टार्ट किया. तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट सेल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के सेल, सम ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर मींस उनका जो एंटायर लाइफ है वो सिंगल सेल से ही कंप्लीट हो जाता है. तो दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव वन एंड ओनली वन सेल. So they are the unicellular organisms. You have heard that name of amoeba, paramecium, chlamydomonas and some bacteria which are unicellular, right? So unicellular means what? A organism contain single cell. And the multicellular organisms में different types of cells, they form tissues से organs बनेंगे and organs से body बनेगी. So multicellular organism and unicellular organisms. Clear? So I hope that today the introduction of cell, the discovery of cell and types of organisms like unicellular or multicellular, I hope you understand all the data, all the content which I explained clearly. So in next video we seen the cell contain what types of organs, what materials cell के अंदर होता है, that we will see in the next video. Thank you very much.